right, Z. So in the last video and in the last lecture, हमने क्या किया था? हमने PPC शुरू कर दिया था. That was PPC part 1. And what did we learn? We learned a production possibility curve is a graph that shows different combinations of two goods that can be produced utilizing all available resources. देसी जुबान में बता दूं, पीपीसी आपकी औकात है. पीपीसी क्या है? एक कंट्री की औकात है कि यूटिलाइजिंग ऑल रिसोर्सेज विद द गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, दो गुड्स. व्हाई टू गुड्स? ये हमारी लिमिटेशन है. व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग ग्राफिकल एनालिसिस. दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं. What different combinations of two goods that can be produced utilizing all available resources. हमने एक स्टूपिड सी कोई एग्जांपल ली थी, जरा बताएं कौन सी? ब्रेड एंड टी. और हमने कहा था what was the maximum amount of resources, quantity of bread that we could produce? 20,000. और फिर obviously T0, क्योंकि सारे resources कहां लग गए? in the production of bread, तो T0 बनेगी. फिर हमने कहा ये बड़ी ज्यादती हो गई है तो हमें resources को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. फिर हमने किया इसको और ये इस तरह 2000 से बढ़ गया और करते 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 हम यहां आगे where 10,000 of this was being produced and 0 of this units were being produced. फिर हमने देखा पीपीसी क्या है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस. देन हमने एक और चीज लर्न कर ली. हमने लर्न किया कि जब भी पीपीसी इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट एन एंटायर economy, then we cannot take these stupid examples. Time, girls. We cannot take these stupid examples. Rather, we should always take what? Preferably, we should always consider capital and consumer goods. Do we know the difference between capital and consumer goods? It varies depending on the use of these two goods. If the final consumer who is deriving the final satisfaction is using the goods, then the same good becomes a consumer good. And if that good is being utilized to produce another good or a service, that same good becomes a capital good. और हमने पीपीसी बना लिया था कंज्यूमर और कैपिटल वाला. बस यहां से हमारी गेम आज की शुरू है. So here we have PPC is one of those graphs जिसकी दोनों तरफ क्वांटिटी है गुड्स की, तो इट डजंट मैटर आप कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स कहां हैं. Perfectly fine. Quantity of, it's up to you, your notes, your life, your brain. If you feel like you can. And here we have quantity of capital goods. Now we know the shape of the PPC. Do we? All right. तो बना लें इसको. Let's call this point A, थोड़ा सा आगे आके B, this one C and this one D. एक ये भी कॉम्बिनेशन है, इसको मैं E कह दूं. And what about this one? Combination outside, I'm calling it F. ठीक है. Now look at combination A, B, C and D. इनमें कुछ कॉमन है? Can you find something common in A, B, C and D? They are all on the line. They are all on the line. चलें जी. Combinations A, B, C and D, A, B, C, D, and all other combinations on the PPC. Combinations A, B, C, and D, and all other combinations. देखिए, these are all combinations, right? कि इतना हम ये बना लेते हैं, and with the resources that we are left with, we can produce this. इतना हम ये बना लेते हैं, and not only these combinations, बल्कि there are numerous other combinations as well. इतना ये बना लें, इतना ये,
यस, बना सकते, बिल्कुल बना सकते। ये सारे कॉम्बिनेशन जो ऑन द लाइन है, व्हाट डू दे शो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? प्लीज नॉक इट, और जोर से। जी, व्हाट इज कॉमन between, they're all on the line, and what is unique about them? All right, so all these combinations, anyone knows इसको क्या क्या, what is unique about them? Yes, वो तो अंदर भी हो रहे रिसोर्स। All these combinations represent, Full employment of resources. yes, full employment of resources. Underline full employment. All resources are being fully utilized and no resource is wasted, idle. कोई रिसोर्स, जितना मुल्क में लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्राइज है, सारे का सारा पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है, and no resource is wasted, idle. All such combinations hence all such combinations are said to be wasted, idle. आज कोई रिसोर्स जाया नहीं हो रहा, जितना अवेलेबल था सारा इस्तेमाल हो रहा है, अभी करते हैं बात। Such combinations are said to be productively efficient. Now you don't need to know what productive efficiency is in AS, लेकिन अगर आप ये नाम ले लेंगे, it will be much better. Productively efficient. The economy is operating at its maximum productive capacity. The economy is operating at its maximum productive capacity. Underline maximum productive capacity as well. Maximum productive capacity. These are key words. Full employment, productive efficiency, या खाली efficiency भी work चलेगा. What does that mean? That means कि economy में जितना land, जितना labor, जितना capital, जितना enterprise. Remember 4 resources that are used to produce other goods and services. जितने resources हैं, all are being fully utilized. कोई एक resource जाया नहीं हो रहा. The economy is operating at its maximum productive capacity. कोई resource जाया नहीं हो रहा. Hence, can we say कि ये utilization of resources बहुत efficient हो रही है? Remember, what was economics? Efficient utilization and allocation. Allocation का इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किससे ताल्लुक है? Utilization से. You're utilizing all available resources. ना कोई मजदूर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई रिसोर्स. Pakistan has one of the few countries which has a flowing river 365 days a year. हमें तो चाहिए था हम उसको फुली यूटिलाइज करें, फ्लड्स भी रुकते डैम्स बना के, और हमें इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी ना बनानी पड़ती फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर, हम डायरेक्ट उसी से बनाते. बट हैव यू डन एनीथिंग? एवर हर्ड ऑफ रेकोडेक सैंडेक? रेकोडेक सैंडेक नाम नहीं सुने? ये इंस्टा पे ना कभी कोई काम की चीज, इकोनॉमिक फोरम और ये भी फॉलो कर लिया करें फजूल. रेकोडेक सैंडेक नाम सुने?
कम ऑन, इतना मसला बना हुआ है रेकोडेक सैंडेक, ये गेम ऑफ कौन नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लग रहा है कि वो है। ये गांव का नाम रेकोडेक एंड सैंडेक, किधर है ये गांव? ये बलूचिस्तान में। एंड क्या चक्कर चल रहा है? it is said to have the fourth or third, I'm not really sure, largest copper and gold reserve in the world. And when was this discovered? Early eras of Musharraf. And when was that? 2000s, early to 2000. And what did we do about it? Nothing. We didn't have any one firm which could mine it. हमारी अपनी कोई लोकल फर्म ही नहीं थी जो माइन कर सकती थी। फिर हमने एक कैनेडियन फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो खराब हो गया। फिर अब जाके एक्सट्रैक्शन अभी भी नहीं हुई है सच, लेकिन अब शुरू हुआ है काम। इन 2023 काम शुरू हुआ है, अभी तक वहां से निकला कुछ नहीं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। Do we understand this? What was this? This is a perfect example of not utilizing your resources to the engineer यहां फारिग बैठे, मजदूर यहां फारिग बैठे. That means we are not operating at our maximum productive capacity. Had we been doing so, तो हमारा PPC कहां होता? On the line. Do we understand this? Is this clear? Online people, are you with me? Yes, sir. Good. अच्छा, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है. What about this? ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है. आप इतना ये बना लें और इतना ये बना लें. क्या ख्याल है? ना खाली ये E, there are numerous other combinations inside the PPC as well. इतना ये बना लें, इतना ये. How about this one? इतना ये बना लें, इतना ये. What is wrong? What is the problem here? You are not utilizing all your resources. The closer you are to the PPC, the more resources you are utilizing. Jitna, the closer you are to the origin, more unemployment of resources. When I say full employment or unemployment, I'm not only talking about labor, I'm talking about all the resources, land, labor, capital, enterprise. Do we understand this? लिखें फिर, हेडिंग दे दें, कॉम्बिनेशन E and all other combinations on the PPC. On the PPC, all other combinations inside the PPC. Inside the PPC. All such combinations represent what? Unemployment of resources. Yes, unemployment of resources. Underline unemployment. All resources are not being fully utilized and are wasted, idle. Hence, all such combinations are said to be Inefficient. inefficient. And how about productively inefficient? Because you are not utilizing all resources to the fullest. Productively inefficient. There is underutilization of resources. There is, make sure you underline these keywords.
underutilization of resources. Underline underutilization. Do we get this? Is this clear? ये बात समझ आई है? There is underutilization of resources. Understood? लिख लिया सबने? अरे सर इसकी रीजंस हैं करनी है हमने yes, obviously अभी तो शुरू हुआ है. And these are the same reasons कि क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन. वो वही है जो पाकिस्तान में आपने अभी हम हल्के फुल्की जो एग्जांपल्स डिस्कस की, लेकिन आगे जाके करेंगे. फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं कि पीपीसी शो क्या कर रहा है. डन? अरे हाँ जी. व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है. ये एफ कि we can produce this much of capital goods and we can produce this much of, and not only F सर बल्कि इट ये भी इज अनअटेनेबल calculation, this much of capital goods and this much of consumer goods. What is wrong here? What is the problem? What? इतने resources. Remember I told you that औकात thing. PPC is showing you your औकात, the maximum capacity, productive capacity, the maximum quantity of these two goods that can be produced if we utilize all our resources. So ये सारे combinations क्या है? They are unattainable. Why? Because we don't have the quality and the quantity of resources to produce these combinations. PPC is acting as a borderline between what can be achieved and what cannot be achieved. All the combinations outside are beyond our reach. हमारी औकात से बाहर है. क्यों? Because we don't have enough quality and quantity of resources. Heading दे दें combination F and all other combinations outside the PPC. And all other combinations outside the PPC. All such combinations are unattainable. Underline unattainable, as we don't have the quality and quantity of resources to produce them. Are unattainable as we don't have enough quality and quantity of resources to produce them. PPC acts as a borderline between what can and cannot be achieved. Hence, it is also called, PPF.
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस, एमसीक्यू में ये नहीं पूछेगा कि इसका नाम क्या है दूसरा, वो हो सकता है नाम ले ले। PPC is known by three names: production possibility curve, and the second one is production possibility frontier. There is another one, जो बात होगी तब मैं बताऊं। तो दूसरा नाम क्या है? PPF। PPF and PPC are the two names of the same thing। ये ना हो कि एग्जाम में कहीं PPF लिख दे, वो आप कहेंगे वो ये क्या चीज है, कभी पढ़ा ही नहीं। So PPF is another name for PPC। What is a frontier? Frontier core, frontier border। So PPF is showing us a borderline between what can be achieved and what cannot be achieved। Remember this name, ले जनाब। So excuse me, I didn't get your name। Zainab। Zainab, you were not here, this is your first class। तो हमने PPC पिछली क्लास में पढ़ लिया था, but these videos are being recorded and being uploaded on YouTube। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकती हैं, वो आपने देख सकती नहीं, आपने देखना है, ठीक है ना। और उसको वहां से कवर कर लेना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल कम टू मी एंड आफ्टर दिस क्लास टुमारो, बट बिफोर दैट यू विल स्टडी इट योरसेल्फ। ठीक है, जनरल आइडिया हो गया। पीपीसी क्या है? एक ग्राफ है। एनीथिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग वी नीड फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जियोग्राफी में पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, विद गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ factors of production, PPC shows us different combinations of how many goods? Two goods that can be produced utilizing all available resources। On the line, one word। On the line, one word। On the line का क्या मतलब है? एक लफ्ज में पारिक कर दो। Full employment। Full employment। Do we get it? Inside the line, inside the line, one word। Inside the line, why inefficient? Because there is unemployment of resources, there is underutilization of resources। Outside the line, unattainable। Outside the line, unattainable, as we don't have enough resources to produce them। Do we get it? Is this clear? तो पीपीसी एक ऐसा ग्राफ है जो कि दिखा रहा है दो मुल्कों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दो चीजों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जो एक कंट्री अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बना सकता है। एक प्रोडक्ट को लेके दो कंट्रीज पे बिल्कुल आ सकता है। वो जब हम करेंगे व्हाट डू यू कॉल इट, टीपीसी के साथ, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। ठीक है, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल इस पे नहीं, वो आएगा यूनिट 6 में, ट्रेड जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? पीपीसी समझ आ गई? इतनी सी बात। चलिए, अब हम पीपीसी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अभी पीपीसी पढ़ना हमने शुरू नहीं किया, अब हम पीपीसी पढ़ना शुरू करेंगे। चलें जी, दे दे प्यारी सी हेडिंग। मेजर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स that PPC helps explain। Major economic concepts that PPC helps explain। Number one, एक हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ सकते हैं पीपीसी के ऊपर। नंबर टू, दूसरा हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन देख सकते हैं पीपीसी के ऊपर। नंबर थ्री, हम अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं पीपीसी के ऊपर। फोर्थ, we can see what else,
स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट पीपीसी के ऊपर देख सकते हैं. फिफ्थ, write it down, this is important. Future growth versus current living standards पीपीसी के ऊपर देखा जा सकता है. और इसके साथ और भी छोटे मोटे लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट्स यही हैं. दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट वी कैन actually learn using PPC. We can illustrate these concepts on the production possibility curve. Do we understand this? Is this clear? Anyone who still has doubts, गुलिस्तान, जरा फोन थोड़ा सा साइड पे रखना जी, थोड़ा सा नहीं, पूरा साइड पे रख, बैग में रखते हैं या जेब में रखना, ठीक है, दैट्स फाइन जी. Anyone who's still not clear about the concept of PPC? PPC एक ग्राफ है जो कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहा है, जो कि सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक कंट्री या इवन अ फर्म, this can also be narrowed down at the micro level where a firm is given a set of fixed quality and quantity of resources and utilizing all of these resources. दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस वो फर्म, चलो अब ये जोड़िए जी. So these are a few major concepts that we can explain through PPC. दे दे फिर प्यारी सी हेडिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चार मेजर साइंसें हैं जो कि हम पीपीसी के ऊपर देख सकते हैं. फोर काइंड्स या फोर एंगल्स से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अप्रोच किया जा सकता है. चलेंगे. द फर्स्ट वन, हेडिंग दे दें तगड़ी से, opportunity cost explained through PPC. Opportunity cost explained through PPC. All right, G. We'll make a drop. इधर मैं ले रहा हूं क्वांटिटी ऑफ गुड A on the x-axis and quantity of good B on the y-axis. All right, we know the shape of the PPC. Can we make it freehand? There we go. Let us assume we are utilizing all available resources and we are at point X on the PPC, where at the moment we are producing B1 of good B and the rest of the resources which we are left with, we are producing A1 of good A. ठीक हो गया? यहां तक मेरे साथ है? Everyone is with me? All right, G. Now what happens is कि you ask, tell me कि सर गुड A की प्रोडक्शन बढ़ा दें, कहां ले जाएं? इधर ले जाएं, A2 पे. Can I do that? How? I don't have enough resources. सारे resources तो मैं पूरी तरह यूटिलाइज कर रहा हूं, मेरे पास और resources तो है नहीं, फिर किस तरह गुड A की प्रोडक्ट, सारे resources यूटिलाइज हो रहे हैं. How do we know that? Because it's on the line. So I cannot increase the production of good A. There is one way of go. And what is that way? If I take out resources from the production of good B and I utilize them in the production of good A. How about that? Okay. This is called reallocation of resources. This is called reallocation of resources. I took some land, I took some labor, capital, enterprise from the production of good B and I put it into the production of good A. What happened? Good A की प्रोडक्शन बढ़ गई, जारी बात है, नए रिसोर्सेज आ गए, इधर जाएं ऊपर until it touches the PPC and then let's call this point Y और इधर जाएं. And
Utilizing all resources that were left with us, we were able to produce B2 of good B. Good A की production बढ़ गई from A1 to A2 and we lost the production of good B from B1 to B2. Now the question is, what is the opportunity cost of increasing the production of good A from A1 to A2? हाँ जी हुसैन, गुड ए की प्रोडक्शन बढ़ गई. Remember opportunity cost? Do we remember the definition of opportunity cost? What was opportunity cost? The next best alternative that is foregone. We have reallocate resources from the production of good B to the production of good A. Good A की production we are able to increase from A1 to A2. What did we lose? What did we forego? What did we let go? कितना गुड बी, कितना गुड बी छोड़ा? From B1 to B2. Can I say, Hanji? So, in order to increase the production of good A, we reallocate resources and we were able to manage that. But what did we forego? What did we let go? What is the opportunity cost of increasing that production of good A? Decrease in production of good B from B1 to B2. ये बात समझ आई है? इसकी opportunity cost क्या है? What did we let go? What did we forego? The production of good B. कितनी? B1 थी पहले, अब कहां आ गई? तो क्या है opportunity cost? ये जो gain किया, क्या खोया? What did we lose? B1 से B2. Do we understand this? किसी को ना समझ आया? Anyone? और एक और बात. Note. Explain again. Note. Whenever there is reallocation of resources, whenever resources are reallocated from one product to another, what happens? हम initially कहां थे? पीपीसी के ऊपर X पे थे और अब हम कहां मूव कर गए? We move from X to Y. Can I say reallocation of resources, reallocation of resources leads to a movement along the curve. Leads to a movement along the curve. तो जब भी reallocation होगी, what will happen? There will be a movement along the curve. What did we learn? जब भी reallocation होगी, उसी curve के ऊपर आप move करेंगे. Opportunity cost देखना आपको समझ आ गया कि if we reallocate resources, if we increase the production of one unit, one good, we lose the production of the other good. And what will be the opportunity cost of doing so? जो आपने दूसरा good decrease किया है, वो उस पहले वाले की opportunity cost होगी जिसको increase किया. Do we understand this? Again, दोबारा बनाएंगे. Hurry up. Another graph. Same concept. Let's take quantity of good X on the x-axis and quantity of good Y on the y-axis. This is our PPC. And initially we are at point A, random ले ले नीचे करके, where we were producing
2,300 units of good X, and the goods which we were left with, we were producing 750 units of good Y. Now you tell me, okay, sir, let's increase the production of good Y. Let's take it to 1,400 units. Can I do that? Hanji, can I increase the production of good Y to 1,400 units? How? I don't have enough resources. How do I do that? I reallocate resources, this time from the production of good X to the production of good Y. This is called reallocation of resources. This is called reallocation of resources. इधर जाएं, this is जहां पे उसको टच करेगा वहां से नीचे. Make sure you touch it to the PPC, and this falls from 2,300 to 1,500 units. Again, there was reallocation of resources. Reallocation होती है, you always move along the PPC, right? इस दफा कहां से कहां गए हैं? From A to B. What is the opportunity cost of increasing the production of good Y from good Y by कितने यूनिट्स बनते हैं 750 से 1,400? 650? Are you sure? 400 and 250? Yes, by 650 units from 750 to 1,400. जी ज़ैनब, कोशिश करें. कहां से कहां तक? 23 से. And how much is this? Decrease in production of good X by 800 units from 2,300 to 1,500 units. Kaisa? Do we get this? Anyone who did not get this? Online people, are you with me? दो चीजें हमने सीखी हैं. Reallocation of resources. 650 कहाँ से? What are you saying? Sir, where did 650 come from? I just assumed it. Which 650? ये In the question. 750 से increase किया 1,400. How much is this? Yes. This is 650 ना. 750 से 1,400 कितना होता है? Okay. This is 650, and how much did we lose? We lost 800 units of good X. Do we get this? 650. 800 lose किया हम. बात समझ आई आपको? Is this clear? पक्की बात है? तो what did we learn? We learned कि जब भी resources को हमने क्या करना होता है? Reallocate करते हैं. What happens? Whenever resources are reallocated, there is a movement along the PPC. And what else did we know? What? Opportunity cost कैसे? मेरे से इतने एडिटिंग नहीं होती. चलेंगे, ये भी चलेगी साथ ही. अब शुरू. All right जी. So if it increases from point R
to point S, Hasan, what is the opportunity cost? ये बढ़ाने की opportunity cost क्या है? What did you forego? Y1 से Y2। इससे आसान कुछ देखा है कभी जिंदगी में? आसान है, मुश्किल? ये अभी आसान है, ठीक है। ये ओ लेवल्स में भी किया हुआ था जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई। कल से जो चीजें हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही, वो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। ऑलराइट, चल दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे, और बात को इंशाल्लाह हम